Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So in the previous section, we did some important practice set on the data manipulation things in UiPath. Today, we are going to be starting a new module in UiPath, that is the data manipulation using lists and dictionaries. That is super important if you are considering about collections, right? Let's get started. Okay. So guys, for here, let's quickly jump into the academy. This is a new module, data manipulation with lists and dictionaries in Studio. So the first part is, यहाँ पे हमें working with lists का एक topic. Let's try to explore that what they have tried to tell us. After this lesson, we'll be explaining the basic concept of list and where we can use them, list the features of invoke and string conversion methods, explain the different arrays and lists, perform data manipulation on lists. Okay. Now, what is a list variable? Before we give a definition for list variables, we should know that list variables are collection type of variables. Means it is not a single string or a single entity, it contains a collection. Okay. Meaning they are a part of system dot collections name. So that is very important guys. ये आपसे पूछा जा सकता है in your interview that lists जो होती हैं कौन सा नेम स्पेस यूज करती हैं, जो सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस का वो पार्ट होता है लिस्ट्स. ओके. लिस्ट, क्यूज, एरेज, हैश टेबल्स और जो भी कलेक्शंस का पार्ट होता है, वट एवर देर इज इन अ कलेक्शन, डेटा इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन, इट इज बीन कंसिडर्ड अंडर systems dot collections namespace. Okay. So they can store numerous elements like names, numbers, time, coordinates and many others. लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. Okay. तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं रिगार्डिंग द डेटा मैनिपुलेशन. इट इज़ रिटन ओवर देयर. It is written that we can add and remove items from list, we can search for an item, we can loop through the items using a for each loop, we can sort the objects or the list contents, and we can extract the items and convert them into other data types as well. Because this is pretty much self-explanatory guys, we'll be doing it in the form of a practice set also, so you'll be getting more clarity that what we can do with the help of all these methods and functions in the lists. Okay. About lists and arrays, let us first quickly see the difference between lists and arrays, but that is been written over there in the academy. To begin with, both lists and arrays are collection type of variables, as I told you. Okay. The array variable enables you to store multiple types of the same type. UiPath Studio supports as many types of arrays as it does types of variables. Means arrays can be of different types. For example, you have an integer array in which you have every item of integer character, integer nature. They are not including the inverted commas 1, 2, 3, 4, 5, 6 only. That's in an integer array. You can have an array of strings as well. For example, names, or inside strings they can be numbers as well, right? This means you can create an array of numbers, one of strings, one of boolean values, and so on, as I just told you. While arrays are fixed, now this is a very, very important differentiation between lists and arrays, guys. Please be very careful. While arrays are fixed size structure for storing multiple objects, it means what once it has been initialized at the runtime, we can't change it, right? It's a fixed size structure. List, on the other hand, it allows us to add, insert, and remove items. Okay, which while arrays don't give us this flexibility with them. Okay, if you want to work with a collection that doesn't have a fixed number of elements, you can go with a list instead of an array. We can say that arrays can be used whenever, for example, if we are using an automation which consists of all the months in a year. So like the months will be static, right? It can't be dynamic. हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते. जनवरी टू दिसंबर है तो वो जनवरी टू दिसंबर ही है. Like, or we can use the weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? These are all the weekdays. तो इसके लिए हम लोग arrays use कर सकते हैं which are fixed, and which are not fixed. For that, we can use lists. Okay, and one more thing, arrays don't need to be initialized, and list needs to be initialized, that we are seeing just ahead. Okay, now let's jump into this part. What is a list variable type, guys? List t मैं आपको करके दिखाऊंगा, don't worry, is a data structure part of the system dot collection dot generic namespace
that I just told you over here, consisting of objects of the same data type. Means only same data type of elements can be inside a list. The T represents the type of elements, pretty self-explanatory guys, of elements in the list. For example, string or integer, sorry. That is why I was thinking string of integers kya hota hai? Strings or integers, okay. Each object has a fixed position in the list and thus it can be accessed by the specific index. Additionally, it provides methods for searching, sorting and manipulating lists. यहाँ पे आप लोग दो टाइप्स के मेथड दिखेंगे, राइट. So what is an iList variable type? ये भी pretty important. वैसे this is used a very less in UiPath, but देख लेते हैं. iList actually an interface, okay. In other words, it is a collection of objects that can be accessed individually by their specific indexes, pretty much similar to lists. As in the case of list, the T represent type of elements in the list. The iList T generic interface is a descendant of the I collection T generic interface and is the base interface of all the generic lists. Means whenever you are using any generic type of list which will be containing, every element, for example, it can be containing, integer, string, some boolean values as well, then we can use a I collection of T. Okay, both list and iList type of variables need to be initialized with a new list of. For example, मैं आपको करके दिखाऊंगा. We have a list of iList of string elements type looking like this. We can initialize with the help of this expression. Okay, that I'll be showing you with the help of an example. Okay. So this is a demo, guys, which I'll be explaining. Don't worry. So it is showing that how to initialize a list variables. First, we can also use the first way to create a list create a list type of variable. Okay. Then we use a build collection. मैं करके दिखा रहा हूँ activity to add items to list and specify the list variable to hold the items. Second way, is it a type of create a list of type variable type, ठीक है. Then add the items inside the default value field. Then initialize the list by typing new list of item from the specified. So we have two types of methods of initializing lists. Let's see them in action in UiPath. So let's quickly create a new process, guys. Chapter 30. Oh, we reached till 30. That's great. List demo. Okay. Create the process. आई होप गाइज दैट मैं आपको जो पढ़ाता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आता होगा. आई एम लिटरली टेकिंग इट वेरी स्लो. 30 वीडियोज़ हो गए हैं एंड वी आर नाउ at lists only because I am covering each and every section individually in the form of small atomic videos. Okay, so I hope that that is very clear. तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि how we can initialize a list in UiPath. So for that, guys, let's assign an activity over here. Okay. I'll be calling it lst underscore input. Lst means list. Okay. So yes, so यहाँ पे हमारे पास एक list है underscore input. Let's quickly initialize our list. So we can give the name as, यहाँ पे इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ ताकि आपको दिखे. I can give that Python. Let's go with all the languages that we have. Python. I can go with C, C plus. Sorry. I can go with Java script, and let's give it a smaller one. Let's go with PHP. So these are the four languages that is coming to my mind right now. That is being widely used in the industry, right? I hope we have correctly done the indentation and all. Okay, great. तो गाइस अभी यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है कि system डॉट स्ट्रिंग का हम असाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, लेट्स क्विकली चेंज इट. So whenever you create a string, a list type of variable, you have to go inside and go for browse for types. And यहाँ पे हम लिखेंगे generic NERIC dot LIST. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ गई लिस्ट ऑफ टी. जैसे मैंने आपको बताया टी मीन्स टाइप. तो यहाँ पे क्या है, दिस आर टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स. मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल गो विद स्ट्रिंग टाइप एंड प्रेस ओके.
ठीक है. Now this is a list of string type of variable. Now what I have to do, I have to initialize my list. Okay. So guys, whenever we are initializing the list, we have to initialize it also. ठीक है, arrays में वो functionality नहीं करनी होती, but for list we have to initialize it also. Like we are initializing a list of strings. So for that, let us do it. यही भी हम लोग कर देते हैं assign में. Okay, so यहाँ पे उसका एक method है new. This you have to remember, guys. New list of means which is it, this type of list? This is a type of string list, right? Of string string bracket, right? So okay, we forgot. अब ये string of list है किस में से है? इतने पार्ट में से है, right? This is the initial value of the string or the default value of the string, right? So I can go with fr1 from, right? So this is, just zoom it, new list of string from, see, this was the list. Just follow me, guys. This was the list. We just initialize this list from this type of expression. This is also pretty much self-explanatory that what it is doing. New means this is a new list of which is the a variable type of string from this part. Pretty easy, right? Save. Now to access this list, like the, for example, I need to print only Python over here, or I need to print only a PHP over here. How can I use? We can use it with the help of an index. Like I'll just write right line, just write lst input. I'll go with 0, right? And as I will start my workflow, it is written Python. Why? Because I already told you guys, in programming everything starts from the index of 0. The collection start from index of 0. The data table columns start from index of 0. The data table rows starts from index of 0. Okay. So as if I'll be or if I had to print it like this, I can do it. As I have already told, what will be the function? What will be the method? String method? That will be the join. Sorry. Join. Okay. That will be requiring a separator. I'll go with the hyphen over here, comma, go with lst input. Let's see our output, guys. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई. This is the output of Python, C++, Java with the help of a hyphen over there. Okay. देखिए ये हमें यहाँ पे नहीं सीखना है. We are just trying to, ये एक method है. This is the single method of initializing list. Now what is the different method, guys? Let's see. Now there is an activity in UiPath called the build collection activity. It will be helping us to build a list. Let's see. Create a collection of items that have the same type as the first specified element. Okay, so if first item will be an integer, the other items will be integer as well. The first item will be a string, other item will be a string as well. Okay, let's see. Let's explore this activity. So let's quickly write it is type of object. Let's write 1. It is accepting because it is a type of object. I have already told you the data types, but is an object, guys. If you have any doubt, please go back and refer to my variables and constants video that you will be explanatory full. Okay. Next items, I can go with 5, add entry. I can go with 10, go with 11. Okay, so there are 3 items in my collection. The build collection of this new collection will be control K. I'll say lst int input like this. So that can be a list of integer. Okay, that can be list of integer. Now if I need to print it, let's see. I'll go with string dot join int input. Let's see my answer. We have 1, 5, 10 and 11. So guys, this build collection will be depending, and whatever item we are giving it over 1 over here, other items will be of type int32. See, it is automatically taken as int32. फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हो that
create a collection of items that have the same type as the first specified element. So the first element, if guys यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं j for example, but it is giving an error. Value of type list of string cannot be converted to list of integer. So आप देख सकते हो इसने automatically यहाँ पे ये part कर दिया हमारे. This is a default, this is the classic way of, you can say, initializing the list, but we have also a modern way. We have an activity to initialize the list as well, that is build collection. Okay, उसका एक catch है, sorry, उसका एक catch है that whatever the first item will be, obviously it is a type of object, the rest items will be following that variable type as well. I'll go here and I'll just say Rohit, you can go with Rahul, okay, and save, right? And I'll be going here and creating a new variable lst str input. Okay, now the error has been diminished and यहाँ पे मैं go with this and it will be printing me the specific list. There, Rohit. So I hope that guys between this and this the explanation is crystal clear. ठीक है, मैं एक एक चीज को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्या यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइस. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा लिस्ट क्रिएट कर देगा एंड इट डजंट नीड टू बी इनिशियलाइज्ड एज वेल. ओके, ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ मेथड. मेथड 1 इज द बिल्ड कलेक्शन मेथड एंड मेथड 2 इज द डिफॉल्ट मेथड, जो कि दोनों आपको आने चाहिए. बोथ मेथड यू शुड बी नोइंग just in case guys, right? You should be knowing that how we are doing this, that I just explained you, and how we are doing this. I have, okay, let's go back to the academy now. Okay, initialize ये वही लिखा हुआ है दो टाइप के. तो initialize a variable is to specify the initial value to assign to it. All variables are given an initial value when they are declared. However, this process is a bit different depending on whether the new variable are of type or of value type or reference type. Now guys, let us quickly understand the difference. Value type for numeric, boolean, date, time and other values, the compiler will give them a valid value if we do not explicitly do so. For example, int is initialized to 0 by default. Ints means integers हमेशा क्या होते हैं, 0 default, 0 initialize होते हैं by default. डेट टाइम इनिशियलाइज टू डेट टाइम, मिनिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट मीन्स जो डेट टाइम हमारे वेरिएबल होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा. दैट इज बीइंग इनिशियलाइज टू द मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट. इन स्टूडियो, strings are also assigned a blank default value even though they are of reference type. Okay, so in interview also guys, they can ask you what is the difference of value type and reference type of variables. Okay, and let's quickly see reference type. Reference type variable like lists and dictionaries initialized to object we provide. The compiler will not assign a value if we don't. This means we need to instantiate an object and assign it to the variable we just declared, right? So this is showing that we have to initialize or we have to instantiate the value of the object and assign it to the variable, जो कि मैंने यहाँ पे किया है ये part, which I have done it over here. Okay. So I hope that this is very clear guys, that what we are trying to do. ठीक है, ये भी वही लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है that that is system.collections.generic.list, ये पूरा है. यहाँ पे आप देख सकते हो in the variables type system.collections.generic.list. यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल टाइप है वो आ जाएगा. system.string है तो string होगा, system.int32 है तो int32 होगा. ओके, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस. Now there is a method in UiPath called the invoke method, जो कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में डाला हुआ, not in the zero to hero series but in my other videos before the series. तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं दोबारा से बताता हूँ गाइस, ये आपके .NET के मेथड्स को इन्वोक करता है. यहाँ पे इस वीडियो के हिसाब से अगर हम चलेंगे, दे हैव यूज्ड अ सॉर्ट मेथड ओवर हियर. इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्टेंस मेथड. व्हाट इज एन इंस्टेंस मेथड? जिसमें हमें टारगेट टाइप को नल रखना पड़ता है एंड वी ओनली डिफाइन द टारगेट ऑब्जेक्ट. There is also a method called a static method in VB.NET, in which this is a vice versa. We have to go with target type, but
वी डोंट हैव टू गो विथ टारगेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने टारगेट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ, वी आर नॉट सीइंग द वीडियोस, वी आर गोइंग विद अवर ओन पेस ओवर हियर, ठीक है। And next is the string conversion method. The method actually converts the first letter of every word in a string to uppercase and the following letters to lower case, right? So guys, ये है यहाँ पे, because see now we are only using the Windows project, so let's focus only on the Windows projects only, guys. So this is the expression system dot globalization dot culture info dot current culture dot text info, guys. This part will be covered in the date time type as well, so please keep an eye on it, but right now के लिए आप इतना part देख सकते हो, to be very frank, and we'll be working on this as well right now, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लेट्स क्विकली डिलीट ऑल दिस, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिस्ट्स ओवर हेयर गाइस, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बिल्ड कलेक्शन, ठीक है। फटाफट हम लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स गिव ए, डालते हैं बी, बी हैं सी, ठीक है, एंड यहाँ डी, राइट, ठीक है। 3 आइटम्स इन ए कलेक्शन एंड दिस लिस्ट विल बी lst input. This is the first type of list, okay। in the video that what they have trying to deliver us, मैं आपको बताया था, ये है ए बी सी डी, यहाँ पे लिस्ट है। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ई, ठीक है। ई बी सी डी एफ एंड ए, ओके, सेव इट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है लिस्ट में, लेट्स क्विकली सी व्हाट आर ऑल दोज एलिमेंट्स। स्ट्रिंग डॉट जॉइन, तो हमारे पास है ई ए जेड एंड एफ, 2 आर अपर केस एंड 2 आर लोअर केस, ओके। तो वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग, एंड यहाँ पे अब हमारा टास्क क्या है, वी नीड टू सॉर्ट माई लिस्ट। नाउ हाउ आई कैन यूज अ sort list function? फर्स्ट हम लोग देखेंगे invoke method। so as I just told you, we are using a instance method, so we don't have to fiddle with target type, we just have to fiddle with target object. Target object is what, in which the I have to perform my functions or the methods over there, that is lst input, and method name will be what, sort। S is capital over here, guys, because this is a .NET function, VB.NET function or Visual Basic .NET function. So we have to use it the this part. What to say? उनके हमें notations use करने पड़ते हैं. Sorry. Okay, so let's give this part as LST sorted. यहाँ पे error है. Return type of L is not compatible. Return type supplied to the invoke method which expects return value of type strings. Okay, no issues. So guys, for this part we don't need to provide any variable to the result side, we just have to leave it like this. So what it will be doing, it is first creating a list over here that has the first element as E, okay। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, I'll just write it here as well, lst input, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हुआ है आफ्टर द सॉर्ट मेथड, ठीक है। एंड ये करेगा, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा हमारी लिस्ट को। टारगेट ऑब्जेक्टिव में lst अंडरस्कोर इन, गॉट इट। तो ये है, सो लेट्स क्विकली सी द आउटपुट गाइस। यहाँ पे हमारी इनिशियल लिस्ट थी ई ए जेड एफ एंड द सॉर्टेड लिस्ट इज ए ई एफ सेट। So we have used the invoke method activity in UiPath. It will be using the .NET function over there to sort the activities, sorry, sort the list, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे आउटपुट है अल्फाबेटिकली। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, in the second part what they have done, string conversion method means they have used two lower
फंक्शन ओवर हेयर, ये इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया. लेट्स सी हाउ दे हैव डन इट. ओके, तो यहाँ पे हम इसके पहले, और इसके यहाँ पे हम डालेंगे राइट लाइन पे, हम लोग डाल देंगे दोबारा से. बट बिफोर दैट गाइज वी हैव टू हमें यह करना है, यहाँ पे हमें एक एक लेटर को क्या करना है, बिग करना है. यहाँ पे टू लोअर करना है या टू अपर करना है. फॉर दैट वी हैव टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट. So how we can do that? We can do it with the help of a for each loop. Quickly, let's do a for each loop over there. यहाँ पे मैं डाल दूंगा lst input. ओके, यहाँ पे आ जाएगा string type because मेरी this is a list of strings. Right line will be inside of this, and I'll go with system dot globalization dot culture info current culture dot text info, and यहाँ पे हम डाल देंगे आपका current text dot to अपर और टू लोअर. अपर है हमारे पास तो वी कैन गो विद द टू लोअर पार्ट. ठीक है, यहाँ पे इट इज थ्रोइंग एन एरर. इट इज सेइंग दैट text info has no parameters and return cat cannot be in text. Did I use something wrong guys? To title case, okay, sorry, to title case हमने नहीं डाला because I'm not using this method more, so I got confused. To title case, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो that when it will be printing all this part, it will be saying that say it is saying that converting to lower. हमने क्या अपर रखा है, लोअर रखा है? रियलाइज इट टू लोअर. ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग आई विल शो यू. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग टू लोअर मीन्स ये क्या कर रहे हैं, जो इसका मतलब होता है ये वाले पार्ट का, टाइटल केस टू लोअर मीन्स इट विल बी कन्वर्टिंग एवरी एलिमेंट फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल एंड रेस्ट विल बी स्मॉल. फॉर दिस लेट्स गो विद elastic, go with apple, let's go with zebra, go with a fan. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो yes, you guys can see that every 1 second. Yes. Yeah. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पार्ट मेरा पहला वाला लिस्ट का था, इलास्टिक एप्पल जेब्रा फैन. दैट दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट विदाउट एनी टेक्स्ट इन्फो कन्वर्जन और स्ट्रिंग कन्वर्जन, राइट. एंड यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस पार्ट वॉज कन्वर्टेड टू एंड to uppercase and the rest was already small. यहाँ पे क्या है, it was same because ये same part था. Fan was converted, F was converted to this, and zebra में Z पहले से ऐसा. So guys, this can be very beneficial if you're trying to convert only the first letter of your string as a to upper and all the part to lower. ठीक है, this is the thing to do over there. To title case current text to upper or current text to lower. ठीक है, to lower what it will doing, it will be converting all those rest of the part will be lower and the first character of the string will be upper. Okay, and guys, if I'll be using to upper, so it will be converting every of the string letters to upper positions. You can see it over here. If I'm using current text to upper, so it is showing every part as upper converted or upper case converted. ठीक है, hope that this is very clear. Let's get back to the academy. यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं. बिल्ड कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया. रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, लेट्स सी. तो ओवर देयर यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव फ्रॉम कलेक्शन. तो द कलेक्शन इज lst
LST अंडरस्कोर इनपुट। अब यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक, अगर मुझे एक स्पेसिफिक आइटम को कलेक्शन निकालना है वो भी मैं कर सकता हूँ। बाय इंडेक्स को निकालना है, अगर स्पेसिफिक इंडेक्स को निकालना है वो भी कर सकता हूँ। ऑल आइटम रिमूव करना है, हर चीज़ वो भी मैं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे स्पेसिफिक आइटम को निकालना है तो आइटम विल बी, फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिमूव इलास्टिक लाइक दिस, एंड देन मैं इस पार्ट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो लेट्स सी आउटपुट गाइस। तो आप देख सकते हो हमारे पास अब यहाँ पे इलास्टिक नहीं है। ठीक है, अगर मुझे बाय इंडेक्स यहाँ पे करवाना है, आई कैन गो विद इंडेक्स। इंडेक्स इज ऑलवेज इन अ टाइप ऑफ इंटीजर। अब मैं करवाना है 0 फॉर एग्जांपल, आई कैन गो विद दैट एज वेल, और आई कैन गो विद 1। एप्पल फैन एंड, आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलास्टिक नहीं था। इलास्टिक किस तो कौन सी पोजीशन पे था, 1 इंडेक्स पे था, यहाँ पे वो भी नहीं है। अब अगर मैं ऑल आइटम्स करूंगा, लेट्स जस्ट प्रिंट माय लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट हमारे पास वो आंसर आ गया। ठीक है, ट्राइंग टू डू वन थिंग, लेट्स सी। या तो अगर हमें ऑल आइटम्स को रिमूव, ऑल आइटम्स चाहिए यहाँ पे, तो वी हैव टू परफॉर्म दिस, हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा वेरिएबल को, दैट वेरिएबल विल बी कॉल्ड ओवर हियर, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वो हमारी लिस्ट एम्प्टी कर दी है। This is remove collection, append item to collection. For example, I need to add one item to a specified collection. मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे if I want to do like this, append items to a collection, so I can do it like this. Collection is lst underscore input items. I can go with banana, save. ये करेगा गाइज, हमेशा लिस्ट के एंड में डालेगा आपके आइटम को। ठीक है, तो यहाँ पे चेक वन थिंग वंस, it is printing it, or I need to create a variable after that it will be printing it. Okay, it can printing like that as well. देखिए हम वेरिएबल ही बना सकते हैं, अगर मुझे ये पार्ट को यूज़ करना है तो देखिए आपने यहाँ देखा होगा स्टेप बनाना है, ऐड करते लिस्ट के एंड पे जाके। ठीक है, आई होप दैट गाइज अपेंड आइटम टू कलेक्शन इज वेरी क्लियर टू यू। वी हैव एक्सीडेड अवर टाइम, नो इश्यूज। merge collection means if you are merging two lists over there, for example I have another list, ये हमने build collection से बनाई है, let's create another list over here, sign, I'll be using uh, lst underscore input underscore 2, this is the type of another list, pc क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, 1 2, दो आइटम्स है लिस्ट में हमारे पास, एंड आई कैन गो विद न्यू लिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग यूज करना है राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम। ठीक है, नाउ जस्ट क्विकली गिव दिस वेरिएबल तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एट द एंड पे जाके यहीं पे कर लेते हैं, एट द यहाँ पे जाके आई नीड टू मर्ज माई दिस टू लिस्ट। तो द फर्स्ट कलेक्शन वॉज lst अंडरस्कोर इनपुट, सेकेंड कलेक्शन वॉज lst अंडरस्कोर इनपुट 2, एंड इसका जो आउटपुट होगा वो मैं यहाँ पे सेव करूँगा, lst लिस्ट merged, enter, and I can call that part over here merged. You see that it is printing the result not. Yep, elastic apple fan zebra 1 2 means it has merged the list. Okay, filter collections means filter a collection based on the specific conditions. Okay, let's see. Filter collection as well. So the collection is lst input. Now filter will be
Click to add a filter. Guys, current item, the conditions to filter the collection on current item. यहाँ पे आई थिंक हमें फॉर ईच लूप यूज करना पड़ेगा. ओके, अगर यहाँ मेरे पास फॉर एग्जांपल कैसे कहें इसे, current item means quickly use it like this for each. तो मैं डिलीट कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड अ कंफ्यूजन. ठीक है, एंड current text. Current item means that specific current item. Okay, if it contains let's say elastic, अगर ये elastic contains करता है, contains ignore case means अगर यहाँ पे हमें upper और lower case में इसको ignore करना है, equals है अगर, या ऐसे करते हैं equals elastic filter action, तो मुझे क्या करना है, इसको remove करना है for example, right? And then I need to be printing my all this part. लिस्ट को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. मैं लास्ट प्रिंट कराता हूँ. पुट फिल्टर कलेक्शन का आउटपुट भी होगा हमारे पास विद LSD स्कोर फिल्टर. क्या बनाया इसका आंसर, LSD अंडरस्कोर. ओके, दैट वाज द स्कोर प्रॉब्लम इश्यूज. या filtered, we see that it is coming or not. Yeah, so it obliterated elastic. इसने elastic को obliterate कर दिया, मतलब निकाल के फेंक के खत्म कर दिया है. ठीक है. Okay, and the last part will be collection to data. Converts a specified collection to a data table. Okay, let's see. Collection to a data table. So the collection will be LST. Let's say input and data table यहाँ पे हम डाल देंगे DT. Put. Now let's see output data table DT put right line, go with str dt. मैं यहाँ डाल दूंगा str dt. Let's see. Yep. So we have this part string apple, elastic, fan and zebra हमारे पास यहाँ पे आ गया है. Okay. At the last line we use output data table. It will be converting my data table to a string part. ठीक है, आप देख सकते हो using the CSV format. यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा लिस्ट आ गया है. आई होप गाइज दैट दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, मैंने आपको इन डिटेल बता दिया एक एक करके ये क्या होता है. ठीक है, लाइक जस्ट क्विकली सी द check knowledge part. The type of collection that doesn't have a fixed number of elements is known. Means fix उसमें नहीं होता. मैंने आपको बताया that will be the list. You're very correct. Okay, guys, in the next part we will be learning about dictionaries, and first we'll be doing a practice set on the list manipulation using the modern activity. Yes, this is very critical, guys. Please don't forget to watch the video as well. Okay, so guys, this was it for this small informative video on lists and dictionaries, but we have not started dictionary. We'll be starting it on a later session. Thank you so much, guys, for being here. Please support me that we're doing. Thank you so much, and thank you so much, guys, for being here. And as always, keep learning.